Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Sekali lagi saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik tuan-tuan sidang maghrib yang berada di Masjid Baitul Salam, begitu juga tuan-tuan dan puan-puan seisi keluarga yang mengikuti daras secara online ini di rumah masing-masing. Doa saya semoga tuan-tuan dan puan-puan semua seisi keluarga berada di dalam pemeliharaan dan kasih sayang serta rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, Allahumma amin. Baiklah, sebelum ini kita telah mendengar beberapa perkara yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sepatutnya ataupun tidak seharusnya kita lakukan ketika kita berada di masjid. Yang pertama, kita dah dengar Rasulullah SAW melarang kita buang air kecil merata-rata, kemudian meludah merata-rata. Kemudian Rasulullah SAW juga melarang kepada kita semua supaya apabila kita selepas makan benda-benda yang ataupun sayuran-sayuran yang mengeluarkan bau yang tidak enak seperti bawang merah ataupun bawang putih, kita janganlah mendekati masjid kerana ianya akan membuatkan orang lain tidak selesa. Di zaman kita ataupun di tempat kita, mungkin siapa-siapa yang baru makan durian ke, dia pun janganlah. Kerana itu nanti kalau dia sendawa, dia akan membuatkan orang lain tidak selesa. Ataupun sebaiknya dia bersihkan mulutnya dulu. Jadi ini beberapa perkara yang dilarang oleh Rasulullah SAW supaya jangan kita melakukannya ketika kita berada di masjid ataupun ketika kita datang untuk mengerjakan solat di masjid. Selanjutnya, insya-Allah pada hari ini saya akan berkongsikan beberapa lagi hadis di mana Rasulullah SAW melarang untuk kita melakukan perkara-perkara ini di masjid juga. Jadi seperti mana sebelum ini pun saya dah katakan bahawa masjid ini dibangunkan ataupun dibina untuk di dalamnya kita banyak berzikir ilahi kepada Allah Ta'ala, kita beribadat kepada Allah Ta'ala, kita membaca ayat suci Al-Quran di dalamnya. Jadi ada protokol, ada cara-cara dan adab-adab semasa kita berada di masjid. Salah satunya juga kita tidak boleh menendang kiblat. Jadi jangan, kalau kita duduk tu, kadang-kadang ketika kita dengar ceramah ataupun ketika kita dengar khutbah, kadang-kadang kita melunjurkan kaki kita ke depan menendang kiblat. Itu pun tidak sepatutnya kita lakukan. Itu adat-adat ataupun adab-adab di dalam masjid. Selanjutnya, kita juga biasa kita sebelum solat Jumaat kita ada pengumuman. Tetapi pengumuman apa yang boleh kita lakukan? Seperti mana permohonan doa itu kita lakukan, ataupun ada acara-acara yang nak kita laksanakan di esok hari ataupun di hari-hari yang berikut, kita adakan pengumuman. Tapi ada satu perkara yang Rasulullah SAW larang untuk diumumkan di dalam masjid. Jadi hari ini kita akan mendengar hadis berkenaan dengan itu, dan insya-Allah ada juga hadis-hadis yang lain yang akan saya kongsi bersama tuan-tuan dan puan-puan sekalian supaya kita dapat mengamalkannya dan supaya kita dapat menghindari diri kita dari melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Rasulullah SAW untuk kita lakukan di masjid. Hadis yang pertama diriwayatkan oleh Hazrat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sami'a rajulan yanshudu dallata fil masjidi falyaqul la raddahallahu alaika fa innal masajida lam tubna lihaza. Jadi Hazrat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan hadis ini di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
jika seseorang itu, jika kita atau kita yang ada dalam masjid ni, kita mendengar ada orang yang membuat pengumuman di masjid berkenaan dengan barang yang dia hilang. Barangnya yang hilang. Kalau ada orang membuat pengumuman dalam masjid bahawa barangnya hilang. Jadi Rasulullah SAW bersabda, sebagai doa yang tidak baik bagi orang itu, engkau hendaklah mengatakan kepada ataupun berdoa kepada Allah, ya Allah, supaya Allah tidak mengembalikan barang kamu yang hilang. Jadi kalau ada orang mengumumkan di dalam masjid barang saya dah hilang, jadi kalau kita dengar perkara itu, kita sebagai doa yang tidak baik bagi orang itu, kita berdoalah supaya Allah Ta'ala tidak mengembalikan barang orang itu yang hilang itu. Kerana apa? Kerana masjid bukanlah dibangunkan ataupun dibina untuk perkara itu. Jadi Rasulullah SAW melarang apabila ada orang-orang yang hilang barangnya, kemudian diumumkan, diadakan pengumuman di masjid bahawa barang saya yang ini dah hilang. Kalau kita mendengar itu, maka kita berdoa kepada Allah Ta'ala, ya Tuhan, janganlah kau kembalikan barang orang yang hilang itu. Jadi kerana apa? Kerana Rasulullah SAW bersabda, masjid bukanlah untuk tujuan itu dibangunkan. Jadi masjid tadi dah saya katakan, tujuannya adalah di dalamnya kita banyak berdoa, kita banyak berzikir ilahi, kita beribadat kepada Allah Ta'ala, dan kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi kalau ada kita mendengar orang mengumumkan barang dia yang hilang, maka hendaklah kita berdoa kepada Allah supaya Allah Ta'ala tidak mengembalikan barangnya yang hilang itu. Jadi ini pun kerana kita selalu mengadakan pengumuman-pengumuman di masjid maupun di mission house, kerana mission house itu merupakan tempat kita berkumpul untuk mengerjakan solat. Jadi itu kita anggap sebagai masjid. Jadi di situ pun kita jangan mengumumkan barang-barang kita yang hilang di dalam itu. Kita tak perlu umumkan. Jangan kita umumkan. Kalau nak cari kat luar. Nak umumkan kat luar. Jangan di dalam masjid. Kemudian hadis yang kedua diriwayatkan oleh Hazrat Umar bin Shu'aib, anak Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tanashudil ash'ari fil masjidi wa anil bai'i wal ishtira'i fihi an yatahallaqa nasu yaumal jum'ati qabla salatil fil masjidi. Jadi ini lagi satu perkara ataupun beberapa perkara yang dilarang oleh Rasulullah SAW untuk kita lakukan di dalam masjid. Apa dia? Jadi Hazrat Umar bin Shu'aib dari bapanya dan dari datuknya, dia meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW melarang perkara ini dilakukan di dalam masjid, iaitu mengadakan atau membaca syair dalam bentuk musyairah. Musyairah di sini kalau kita memang tidak adalah, kita tak buat tapi negara-negara Timur Tengah, di Pakistan, di India, mereka akan kumpul ramai-ramai, kemudian mereka macam bersyair-syair lah. Kalau kita memang tidak adalah benda tu, perkara itu kita tidak lakukan tu. Atau mungkin kita boleh katakan seperti berzanji, mereka berzanji ramai-ramai kan, macam tu. Itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Membaca nazam dalam acara-acara tertentu itu dibolehkan. Tetapi dalam bentuk kumpul ramai-ramai, kemudian dia baca nazam-nazam dia, syair-syair dia ataupun berzanji, ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Tak boleh mengadakan perkara itu di masjid. Kemudian apa lagi yang dilarang oleh Rasulullah SAW? Kemudian mengadakan ataupun melakukan jual beli di dalam masjid. Itu pun dilarang oleh Rasulullah SAW. Jadi sebab itulah kita pun canda kita bayar canda, kita berjual beli dengan Allah SWT. Jadi sebab itulah kita larang. Kalau pembayaran canda pun kita tidak mahu melakukan di dalam masjid. Kita selalu galakkan mereka melakukan di luar. Jangan di dalam ruang solat, di dalam masjid ni. Jadi itu dilarang. Jual beli, perkara-perkara jual beli itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Kemudian apa lagi yang dilarang oleh Rasulullah SAW? Ada orang-orang yang datang awal sebelum solat Jumaat. Jadi dia berkumpul satu kelompok sana, satu kelompok sana, satu kelompok sana, dia berborak-borak. Ini dilarang juga oleh Rasulullah SAW. Kalau kita datang awal untuk solat Jumaat, kita kerjakan solat nafal.
itu adalah lebih baik kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Daripada kita duduk satu kumpulan, satu kelompok di sini, satu kelompok di sana, satu kelompok di sana, kemudian kita berborak tak tentu hala tentang politik lah, tentang apalah. Ini tidak ataupun dilarang oleh Rasulullah SAW. Sebaliknya, hendaklah kita mengisi masa kita itu dengan mengerjakan solat nafal. Jadi di dalam hadis ini 3 perkara dilarang oleh Rasulullah SAW dilakukan di dalam masjid. Pertama, berkumpul untuk mengadakan ataupun pembacaan syair-syair ataupun seperti berzanji itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Kemudian mengadakan jual beli di dalam masjid itu juga dilarang oleh Rasulullah SAW. Kemudian sebelum solat Jumaat dimulakan, kita datang awal, kita duduk berkelompok-kelompok, kemudian kita bercakap-cakap perkara-perkara yang tidak ada kaitannya dengan masjid ataupun dengan agama. Itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Jangan kita lakukan. Sebaliknya, hendaklah kita mengisi masa kita itu dengan mengerjakan solat nafal. Itu adalah lebih baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. आज 2 hadis इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इससे पहले कल भी मैंने कुछ हदीसें पढ़कर सुनाया था जिसमें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ बातें मना फरमाया मस्जिद में नहीं करना चाहिए। उनमें से एक ये है कि पेशाब करना और थूकना, और इसी तरह जब प्याज या लहसुन खाने के बाद आप मस्जिद के करीब ना आए। ये कुछ बातें जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मना फरमाया। और आज भी 2 हदीसें जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको उस पर अमल करने से मना फरमाया। वो क्या है? ये नंबर 1, हदीस नंबर 1 हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई सुने कि कोई आदमी अपने गुमशुदा चीज का ऐलान मस्जिद में कर रहा है तो बतौर बददुआ वो उसे कहे, अल्लाह ताला तुम्हारी ये चीजें तुम्हें वापस ना दिलाए। तो ये हज़रत सल्लल्लाहु ने मना फरमाया कि कोई भी शख्स अपने गुमशुदा चीज मस्जिद में ऐलान नहीं करना चाहिए। अगर कोई ऐसे ऐलान करे अपनी गुमशुदा चीज को तो बतौर बदुआ, हज़रत सल्लल्लाहु ने फरमाया बतौर बदुआ उसे कहे, अल्लाह ताला तुम्हारी ये चीज तुम्हें वापस ना दिलाए। क्यों? आगे हज़रत सल्लल्लाहु ने फरमाया क्योंकि मस्जिदें इस गरज के लिए तामीर नहीं की गई है। मस्जिद इसलिए इस गरज के लिए तामीर नहीं की गई कि मस्जिद में गुमशुदा चीज को आप मस्जिद में ऐलान करें, बल्कि मस्जिद इसलिए तामीर किया गया है ताकि उसमें हम अल्लाह ताला के हुजूर में ज़्यादा से ज़्यादा जिक्र करना चाहिए, इबादत करना चाहिए, उसमें तिलावत कुरान करना चाहिए और अपने गुमशुदा चीज को मस्जिद में ऐलान नहीं करना चाहिए। दूसरी हदीस हज़रत उमर बिन शुएब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने बाप से और अपने बाप से अपने दादा से रिवायत करते हुए बयान करते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात से मना फरमाया है कि मस्जिद में मुशायरा के रंग में अशआर पढ़े जाएं या उसमें बैठकर खरीद और फरोख्त की जाए या जुमा के दिन नमाज से पहले लोग हल्के बनाकर बैठे बातें करें। तो इस हदीस में 3 बातें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि मुशायरा के रंग में अशआर पढ़ा जाए मस्जिद में, ये हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। अगर कोई प्रोग्राम हम कोई इजलास बनाए उसमें नज़म पढ़ी जाए उसमें कोई मना नहीं किया, लेकिन मुशायरा के रंग में अगर अशआर पढ़ा जाए मस्जिद में वही हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। और उसके बाद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी मना फरमाया कि मस्जिद में खरीद और फरोख्त नहीं करना चाहिए। तो इसलिए ना हम जब चंदा देते हैं हम मस्जिद के अंदर में चंदा नहीं देना चाहिए क्योंकि ये खरीद फरोख्त है अल्लाह ताला के साथ। तो इसलिए जब चंदा देना चाहते हैं तो बाहर मस्जिद के अंदर में नहीं करना चाहिए बल्कि मस्जिद से बाहर करना चाहिए। और तीसरी बात हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि जुमा के दिन नमाज जुमा से पहले लोग हल्के बना के बैठे और बातें करते हैं।
यहाँ एक हल्के हैं, उधर है हल्के हैं, इधर है हल्के हैं, और वो बातें करते उसमें, ये हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। तो ये बातें अगर हम उस पर अमल करें तो हम हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम पर अमल नहीं करते। तो इसलिए जो बातें हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया उसको हम उस पर अमल नहीं करना चाहिए। जो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मस्जिद में नमाज अदा करना चाहिए, मस्जिद में जिक्र इलाही करना चाहिए, मस्जिद में कुरान करीम पढ़ना चाहिए, वो हम उस पर अमल करना चाहिए। अगर हम नमाज जुमा से पहले जल्दी आ जाएं तो बजाय हम हल्के बना के बातें करें, हम 2 नफले नमाज पढ़ें, उसमें दुआ करें, ये उससे बेहतर है। तो इसलिए जो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मना फरमाया हम उस पर अमल नहीं करना चाहिए, और जिससे हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको यही फरमाया कि उस पर अमल करें तो हम उसको अमल करना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। Amin, Allahumma amin. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita semua supaya kita dapat beramal sesuai dengan nasihat-nasihat Rasulullah SAW, di mana di dalam masjid hendaklah kita perbanyakkan zikir ilahi, perbanyakkan ibadat kepadanya, dan jangan sekali-kali kita melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Rasulullah SAW seperti mana yang kita dah dengar di dalam 2 hadis yang saya kongsikan bersama tuan-tuan dan puan-puan pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua supaya kita dapat beramal sesuai dengan apa yang dinasihatkan oleh Rasulullah SAW kepada kita semua. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.